पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। बादल की छाँव से, तारों के गाँव से, पार चला जा जग की हवाओं से, पार चला जा जग की हवाओं से। छोड़ के पीछे नील गगन को, ये घड़ी है प्रभु मिलने की। मन पंछी भूल के सारे जग का आकर्षण, तोड़ के छूटे देह का बंधन, तोड़ के छूटे देह का बंधन। उड़ जा प्रेम के पंख लगा कर, दिल में लगन अब मिलने की। मन पंछी सुख में हम खो जाए, परम पिता से आनंद पाए, परम पिता से आनंद पाए। प्रभु मिलन के परम सुखों से, कलियाँ खिलती है तन मन की। मन पंछी तू उड़ जा वतन में, रुत है ये प्रभु मिलने की। मस्त पवन है, महका चमन है, मस्त पवन है, महका चमन है, बेला है मंगल मिलने की। मन पंछी तू
वतन में रुत है ये प्रभु मिलने की मन पंछी। सभी का याद प्यार लेते हुए जब बाबा के पास भोग लगाने के लिए पहुंची, बाबा ने बहुत प्रेम से दृष्टि द्वारा स्वागत भी किया और मुलाकात भी की। क्या बाबा भोग लाए हैं आपके लिए और यशु दादी के भी निमित्त। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए भोग स्वीकार किया और यशु दादी को भी स्वीकार कराया। तो मैंने कहा ऐसे तो बाबा आज जगदीश भाई का भी स्मृति दिवस है और वो भी आपके बहुत अनन्य बच्चे थे, तो हम चाहते हैं कि उनको भी भोग स्वीकार कराएं। तो बाबा मुस्कुराते हैं और बाबा के लिए तो क्या बड़ी बात है। हमको नहीं पता है वो आत्मा कहाँ है, पर बाबा से तो कनेक्टेड रहते ही हैं। तो बाबा उनका अव्यक्त फॉर्म, अव्यक्त रूप से उनको वहां इमर्ज किया और वो बहुत मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा आपके लिए भी याद प्यार आई है और ये भोग स्वीकार करना है। तो उनको भी भोग स्वीकार कराया और फिर थोड़ी देर के लिए जैसे सभी आपस में नैन मुलाकात कर रहे थे, तो उसके बाद बाबा ने कहा देखो संगम युग पर आपको हर प्रकार की समझ है और आप जो चाहे सो कर सकते हो समझ के आधार से। तो बाबा ने कहा कि देखो जो भी अलॉय रहता है अभी आत्मा में, किसी भी तरह का अलॉय, तो योग अग्नि प्रज्वलित रखो। ऐसा तो नहीं होता है कि अग्नि जलाएंगे फिर बुझाएंगे फिर जलाएंगे। तो आज बाबा ने कहा नहीं, योग अग्नि प्रज्वलित रहती है। तो जिसको ये याद रहता है कि योग अग्नि प्रज्वलित है, तो वो समय प्रति समय दिन को खुद को उस अग्नि में तपाकर या अग्नि से अलॉय हटाते हैं, अलॉय को मिटाते हैं, पिघलाते हैं। फिर बाबा ने कहा देखो यज्ञ भी एक अग्नि है ना, बाबा ने यज्ञ रचा है, ये भी एक अग्नि है। तो वो भी ज्वाला जल रही है, इसलिए जल रही है कि जो स्वाहा करना है वो करो और जो सफल करना है वो भी यज्ञ के द्वारा ही होता है। तो अगर आत्मा का लॉय मिटता जाए और सब कुछ स्वा होता जाए और सफल होता जाए, तो आत्मा संपूर्णता की तरफ तीव्र गति से बढ़ सकती है। बहुत ही अच्छा बाबा समझा रहे थे। फिर उसके बाद बाबा ने कहा यशु दादी की एक विशेषता थी कि वो सदा निरंतर रही, अखंड रहा। उनका बाबा पर निश्चय, बाबा से प्यार एकदम अखंड था, कभी खंडन नहीं हुआ। जैसे कई बार कहीं बुद्धि योग लग जाए या कोई पदार्थ की इच्छा हो जाए तो खंडित हो जाता है ना। तो निश्चय भी निरंतर था और हर चीज जैसे कि एकदम अखंड थी। और इस कारण बाबा ने कहा कि उनको लंबा समय जो इतना विशेष पाठ था वो बजाने के लिए मिला। तो बाबा ने कहा यज्ञ के इतिहास में परिवर्तन तो आता ही है। तो जिस समय तक उनकी जरूरत थी उस पाठ की, उन्होंने बजाया और अब जो पाठ है वो अलग तरह से चलेगा। तो मैंने बाबा को देख के कि कैसे वो पाठ चलेगा बाबा,
कुछ बोले नहीं, बाबा ने कहा भिन्न पाठ चलेगा। उसके बाद बाबा ने फिर आज बहुत अच्छी बात बताई कि देखो हर मिनट ड्रामा में जो कुछ होता है, कोई बात होती है, कोई सीन आता है, कुछ समाचार सुनते हो, परिस्थिति आती है ना ड्रामा, परंतु बाबा की याद में अगर होंगे तो बाबा ने कहा ड्रामा की हर बात में कल्याण, हर बात में आप अनुभवी बनेंगे। तो बाबा ने कहा जितना अनुभवी बनेंगे, और फिर बाबा ने कहा कि हर सीन को ठीक से पास विद ऑनर हर बात को करेंगे तो जरूर है कि संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करते जाएंगे। तो ड्रामा को कभी भी कोई बात को भारी नहीं समझो, कल्याणकारी समझो। हर मिनट इसमें भी कुछ कल्याण है, ये जाप करते रहो, अच्छा ये बात इसमें भी कल्याण है। तो बाबा ने कहा कल्याणकारी युग में कल्याण कल्याण कहते हुए आपका भी कल्याण होगा और आप दूसरों के भी कल्याण के निमित्त बनेंगे। फिर बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत याद प्यार दी और बाबा ऐसे दिखा रहा था कि बाबा अपनी दृष्टि से जैसे जैसे आगे कदम बढ़ाते हैं तो बच्चों को वरदान भी दे रहे हैं, जैसे कि वरदानों की एक एक परवर्षा भी हो रही है। Now I have to say in English, right? I gave love remembrances, got bhog offered to Ishudari, and I told Baba about Jagdish Bhai, that today is also his day of, we remember him. So Baba very, very quickly invoked the angelic form of Jagdish Bhai and also told him Bhog has come and offered. He was very, very much smiling and happy. And then Baba said, you all are very sensible and you know that there is yoga is fire and keep it ignited so that you can melt your alloy from the soul, any alloy which is left. And then there is also fire of yajna, flame of yajna. So in that also you keep sacrificing, sacrifice swaha, whatever weaknesses are there, anything which is not you're not happy about, just sacrifice. But also it is through yajna that you are able to use everything in worthwhile way and create fortune. So it was very beautiful the way two fires, fire of yoga and flame of yajna. So whole day just keep thinking of that. And then Baba also said every scene of drama, situation, anything happens, always remember it's beneficial. It's some benefit in that. Some keep saying beneficial, beneficial. You will not only see benefit, but pass with honor, and you will be able to move towards stage of perfection. So that was something Baba said, always keep remembering that it's beneficial. You will have more and more experience of every scene and every situation. And then Baba gave love for everyone, and I saw Baba according to how one is receiving, keep giving everyone lots of blessings, lots of blessings. Om Shanti. Om Shanti. Thank you, Didi. As you all know that today is 12th of May, which is also the day for our dear brother Jagdish ji. So it's very special for both souls. We offered bhog together, and now
Let's start our series, The Story of Immortality. Today's step 12, The Drama of 4 Ages, Preparing to Go Home. Now we will listen to Mohini Didi. Om Shanti. At Confluence Sage, we come to know that it's the time for ascending. Yes, we did descend. There was decline in the degrees, but now is the time of ascending. So ascending is actually going higher, becoming elevated, completely pure. So decline happened because of decline in the degrees of purity. But now we have to increase the degrees of purity. And it's very beautiful when, as I shared in the Bhog message, that in purity, whatever are obstacles or impurities, one is, as it is in the cycle, that in every age, different kind of alloy get mixed in the soul, in the gold. Soul was completely pure gold. So in golden age, birth after birth, gradually, few more sanskars, few more sanskars. It is just like from the gold, we make ornament. And whenever you make ornament, every time they melt it, but then to make ornament, they have to mix some alloy. So same is birth after birth. In every birth, few sanskars, the alloy of few sanskars get added in the pure gold. So even if it's not impurity, but it's also not 100% gold. And that is why Baba gave the example of gold, because, birth is like ornament. So when there is alloy, so when they have to, uh, that means the soul every time, it's a pure gold in the beginning, then take one birth, then another birth. So little by little, the alloy of silver in the gold, and then of copper, then of iron. And at this time, uh, Lord iron is in the gold. Right? So when we come to Baba, we realize and we know that ornament, so body also, elements also, everything around just become, as Baba mentioned, that we start with Sato Pradhan, then there is Sato, then is Rajo, then Tamo, and Tamo Pradhan. That is climax of Tamo. So Tamo really means black, dark, or it also means mm, that it's very, very dark, very darkness, Tamo. So then Baba wants us to, melt this alloy in the fire of yoga. And I really liked when Baba said, was just seeing two fires. One is fire of yoga. So put in that, be in that as a whatever alloy is there, because every day you have to keep removing alloy, right? And then on the other side, there is yagya, flame of yagya. So what I do in that flame, I sacrifice, keep giving whatever I have to still offer to Baba. But then also through my mind,
through my body, through my wealth or contacts, whatever I can create my fortune by using it in worthwhile way. So if we keep both flames in front of us, actually, as Baba said it, so what happens that the purity, the degrees of purity keep increasing, and you feel you are ascending, not only ascending, but also kind of very, very, because purity brings a lot of stability. It's some kind of impurity, whether weak thoughts, useless thoughts. We are sensitive, so we take thoughts from here, there. That's the impurity. Even if we have left five vices, right? We have conquered five vices, but the traces of sanskars of these vices keep coming up. And they are very little. They are like little ants and insects and little, or just the dust. But at this time, some or other, some of us are, as Baba said, if you see the drama beneficial, then you will not be stuck. Yes, everything is beneficial. Get few minutes to be in silence and to absorb, reflect, right? So ascending internally deeply is through purity. You are ascending every day, moving towards the stage of perfection. So I feel we are very fortunate, because if we didn't have this knowledge, we'd decline more. Like in today's world, more impurity, more peacelessness, more conflict, loss, insolvency. So it's like declining. For ascending, whatever we have in the mind, always elevated thoughts for everyone, good wishes, elevated thoughts for everyone. And through body, through words, through actions, just kindly serve everyone. Kindness, love, very, very important. And then whatever resources we have, also we use it in worthwhile way. So ascending, always remember I am ascending. So we don't stop, but we keep ascending. We take benefit of the knowledge of the time, and we spin the cycle and move towards ascending degrees. Om Shanti. Om Shanti. So now we'll begin our journey and would like to invite our two angels. Welcome. Step 12. The step 12, preparing to go home. Over the last few days, I have been hearing so much about the cycle of time and the vast drama of life, with so many actors and scenes, including how I lose my sovereignty and how I gain it again. It all sounds very exciting, but rather exhausting. I wonder if there is a time or a place to take a rest. It's been a long time since you left your home, the place of rest and silence. You have forgotten the way to return there. And so the Father has now come to show you the way.
You have been inviting the Father to come, saying, "Take us home. Take us to the land of peace." Now, the Father says, "O souls, ask your heart, how can you return home impure? Now that you have to return home, you definitely have to become pure. You also understand that you are now given the secret method to become pure. This is the method I give you cycle after cycle. Consider yourself to be a soul. Remember me, the Supreme Soul. This is Man Manabhav. This is the fire of remembrance through which your sins will be burned. I have been reminded by the Father that in order to go home, I have to become pure. To become pure, I have to keep my mind with the Father. The soul world is your sweet home of silence. You now have to return home, and then from there, you have to go down into your kingdom. Some have a long rest in the land of peace. Some do not rest there for long. They have an all-round part. Not everyone will return to the world stage at the same time. You know that each human being of the whole world has a part to play in the world drama. The actors must be sitting somewhere while waiting to come and play their parts. Souls come down from up above and play their part at the accurate time in the drama. They do not return to the home between the ages. Souls take rebirth from their first birth in the drama until they reach the end of the cycle. Souls cannot be liberated from playing their part in this drama. They cannot stay forever in the home. People go to so much trouble searching for peace. They do not understand that they were in the abode of peace, their home, and that they came down here to play their role. Each one's role is now ending, and all souls are to return to where they came from. All return home at the same time. You have to return home on time. It is not that you can go faster and reach there earlier. No. It is not in your hands to go sooner. This is fixed in the drama. He stands up to go
inviting me to ponder in silence what he has been telling me. He reminds me again and again about the magical nectar he has given me. Manabhav. He says, when I use it, this will help me to remember him and what he has told me, to remember my true home and look ahead to the splendid world of light awaiting me when I walk onto the stage again. So we'd like to invite Sister Rita to come on to join us. Om Shanti, Rita. Om Shanti Didi, Om Shanti everyone. So Rita, now that we've come to know, so well about this journey of the descent and the ascending energy, as Didi was saying, through the cycle of time. And, we're recognizing that it's now time to go home. Like time is coming really close. And, knowing that time is so short that, and we can feel that, every day we feel the shortness of time. Has that some way encouraged you to remain Manabhav, practice Manabhav a lot more than perhaps when you first came into Gyan? What's your experience of the practice of Manabhav been at this time? There are two words that come into my mind, and the two words are now and benefit. And Didi was also talking about the benefit. That I realized that if I want to experience all the beauty of a perfect, pure, harmonious relationship in the Golden Age and the Silver Age, then I will need to make that effort now. And not only that, I need to experience it now. It's only now. It is in no other time that I can connect to God, that I can meet him as my father, I can meet him as my teacher, I can meet him as my Sadguru, and so much more, and have the opportunity to burn. Like Didi was saying, the two fires for me, the fire of remembrance and the fire of love is one, and then the fire of the yagya. But it's only now that I can experience his love and his power, and that he can inspire me to create my golden age sanskars and become worthy. And by remembering, I realized by remembering my teacher, I will remember everything that he teaches me. And I realize that golden age starts now in me. When I think about golden age, I'm not thinking about golden palaces studded with diamonds and jewels, but I'm really thinking about a world of happiness, of joy, of harmony. And that is what we need to create now. And that makes me try to do it more often. But I also realize that anything can happen suddenly. Yeah. I might even die today or tomorrow. I don't know. Suddenly doesn't only mean the end of the cycle or the end of the war coming up or whatever, but my end. How much time do I have? And I do want to, and I do have to return home filled with all the richness that Baba is offering me only now in this auspicious confluence age. So my effort for Manmanabhav should be now.
Oh, that's very beautifully shared. Yes, thank you so, so much. And I do think, at this time, with, everything being so unpredictable, that it's causing all of us to come closer and closer to Baba in this practice of Manmanabhav, going into that eternal stage and just being in the silence and experiencing it. So thank you so, so much for sharing with us over the last 3 days. We've enjoyed very much having you with us. And, and we hope to see you again soon. I thank you too. I thank Didi. I thank Drama. I thank everything for giving me the opportunity. I really enjoyed. And still I can say I'm also glad that it's done, because but I'm happy I had a chance, and you've done a wonderful job. Thank you so much. Okay. Om Thank Shanti. you, Rita. Om Shanti. Shanti. Bye. bye. And so now it's time for our godly quest. And it's very much focused on what we've been sharing about going home, preparing to go home, and Manmanabhav. So our Amrit Vela practice is in silence, in the stage of Manmanabhav, I return to the sweet home. And as we travel through our day tomorrow, I am a pure soul and I am preparing to go home. So at those traffic controls, having this thought, I'm a pure soul and I'm preparing to go home. And for our nighttime reflection, our chart, I, the soul, am preparing to travel back to the sweet home. Is my practice of Manmanabhav increasing day by day? So all our practice is very much focused on Manmanabhav and going home. So we can write down 8 words that describe our experience of Manmanabhav, or draw an illumination, a picture that describes that experience. Om Shanti. Om Shanti. Thank you very much, Sister Rita. We really enjoyed 3 days of your sharing. Thank you for coming. And also to Sister Julia and Sister Rita. We're really enjoying our journey. And now let's start our Vikti journey. Welcome to our Vikti journey. Mama's Murli, the lucky star who could speak God's language. नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। अच्छा, टाइम तो हुआ है, आज संडे भी है, थोड़ा छुट्टी का थोड़ा तो फायदा देना चाहिए ना। और ये फायदा है बड़ा, ये कमाई है, ये ऐसा नहीं है भले बैठे हो, देखो ये कमाई कैसी है, चुप से ऐसा बैठो कमाई, ऐसी कोई कमाई देखी? हाँ, सब कमाई में हाथ चलाना पड़ेगा, वो चलाना पड़ेगा, इससे ऐसा बैठे रहो चिप आपकी याद में, और कमाई होती रहती है। कौन सी कमाई? हमारे पाप नाश। हाँ, इससे योगा अग्नि से हम पापों को नाश करते हैं,
और इसी से हमारे देखो पाप नाश हुआ तो हम प्यूरिफाइड होते हैं और उस प्यूरिफिकेशन से तो हमको सब कुछ मिलता है, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग। तो देखो ये कमाई अच्छी नहीं है, तो ऐसी इजी कमाई। और फिर क्यों कहते हैं कि नहीं फुर्सत नहीं, ये है बहाने देते हैं, इसके लिए तो फुर्सत कैसे भी निकालनी चाहिए। और तो भी इसका टाइम ऐसा है सवेल सुबह का, जितना सवेल हो अच्छा है, क्योंकि अमृत वेला सवेल का वैसे भी कोई शुभ देखो कीर्तन करते हैं, कुछ भी ऐसा होता है सवेल का, क्योंकि सवेल में ऐसा टाइम होता है। उनको टाइम में भी देखो सारा दिन का टाइम है ना, उस टाइम में भी स्टेजेस है। सवेल सुबह का अमृत वेला कहते हैं और उसको गोल्डन टाइम। पीछे धीरे धीरे जैसा दिन चढ़ता जाता है, सुबह का टाइम देखो कोई भी पाठ करेंगे, पूजा करेंगे सुबह को, सब सुबह को उठेंगे तो भगवान का नाम लेंगे। कोई बुरा काम सुबह को नहीं। रात को चोर चोरी भी करेगा, रात को लोग विकार में भी जाएगा, तो रात गंदी, इसीलिए रात में तो चोर को चोरी करना भी है, तो वाइब्रेशन जो है ना वो है, और सारे विकार में जाते हैं। तो देखो ये वाइब्रेशन। बाकी सुबह का जो टाइम है 2 बजे के बाद 3 बजे इसी समय, तो सवेर का जो टाइम है उसको अमृत वेला गिना जाता है। तो ये सब उसी समय कोई ना कोई भगवान का नाम लेंगे, राम का। देखो मुसलमान लोग है ना, सुबह को 5 बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे वो भी खुदा की बंदगी करेंगे। सब क्रिश्चियन लोग भी हैं, वो भी सवेर देखो चर्चेज में जाते हैं कितने। तो बहुत करके जो सुबह का टाइम होता है उसमें वाइब्रेशन, वर्ल्ड का सारा वाइब्रेशन पवित्र रहता है, क्योंकि उसी समय कोई धंधा धोरी और इनका भी हंगामा बुद्धि में नहीं होता है, और सबके अंदर में भगवान की। उस समय कोई उठेगा ना, पहले तो कैसा भी होगा, मतलब भगवान को उल्टा के सीधा, फिर भी अच्छे ही रहेंगे। फिर दिन होता है, फिर काम धंधा, उसको फिर रजोगुण स्टेज कही जाएगी, रजोगुण, क्योंकि काम धंधे की फिर बुद्धि वाइब्रेशन ऑल राउंड चलते हैं। और फिर ऐसी फिर स्टेजेस हो जाए। रात तो है ही, चोर को चोरी करने का भी मेरा टाइम आया, उसके वाइब्रेशन से और विकारों के वाइब्रेशन वो सब, तो वो गंदगी का, इसीलिए वो टाइम सुबह का सवेर है। इसीलिए अपना क्लासेस बहुत है, पंजाब और उधर बहुत सवेर चलते हैं, परंतु है सुबह का टाइम सवेर उठ के अपने घर में भी तो उठ के सवेर बैठना, बाप को याद करना, ये सभी जितना जितना करेंगे उतना उतना अपना बल मिलता है। तो ये होना चाहिए, ये अभ्यास अपने में बनाना है, यानी कि उल्टी बॉडी कॉन्शियस की प्रैक्टिस हो गई है ना, अब इसको सुलटा करना, तो वो प्रैक्टिस डालनी है नहीं अपने में। तो ये हमको टाइम सुबह का तो मिलता ही है, थोड़ा नींद से करके कम करेंगे ना, थोड़ा से घंटा आधा निकाल करके हम सवेरे सुबह को ये अपने में प्रैक्टिस डालें। फिर इधर आते हो, सुनते हो, रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसमें रिमाइंड मिलता है कि हमको कैसे करना है, उसका ढंग मिलता है। तो जितना जितना वो ढंग बुद्धि में बैठता जाएगा उस प्रैक्टिस में मदद होती जाएंगी। तो ये ज्ञान मदद करता है योग में। फिर हम सारा दिन काम करते भी फिर आस्ते आस्ते तो वो प्रैक्टिस भी होती जाएगी और खुशी रहेगी। ये सुबह की याद है, वो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं ना, सवेर उठ कर करके, क्योंकि सवेर की बुद्धि जो होती है, नींद करके उठते हैं ना, फ्रेश रहती है, तो उसमें जो भी धारणा बनानी होती है ना जल्दी हो जाती है। तो इसी में बच्चे भी सवेर उठ करके पढ़ते हैं, जो इम्तिहान के और जो पढ़ने के चुस्त होते हैं वो सवेर सवेर उठ कर करके पढ़ेंगे, क्योंकि सवेर की मेमोरी जो है ना उसमें यादाश्त आ जाती है। दिन में इधर उधर किया उसमें फिर सब भूल जाता है। तो सवेर का इसीलिए महत्व अमृत वेला कहते हैं, उसको कहते हैं अमृत वेला। तो ये अमृत वेला की अपना लाभ लेना चाहिए। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। Om Shanti.
So that was Mama's voice. So she explained one thing in so detail that it just gets into our understanding. So thank you. And now let's remember Baba. We have a good time today. So let's take these few moments all together in powerful Baba's remembrance. Om Shanti also is Manmanabha, right? So keep internally saying Om Shanti and good night, everyone. Keep well. Take care of yourself. Om Shanti. Good night.